A rapid increase in gold auctioning by non-banking gold loan lenders since the second quarter of 24-25 owing to the new RBI guidelines. And in addition to that, last year the RBI has asked banks and the NBFCs firms not to disperse cash component in excess to rupees 20,000 on gold loans. I'd like to ask the government whether it is taking measures to prevent this large-scale auctioning of gold, because a lot of people who don't have enough time to pay back their loans are suffering because of that. And small-scale borrowers find it very difficult to pay back these loans. And suddenly when these non-banking loan providers suddenly auction the gold. And I'd also like to know, why are you restricting the cash disbursal at only 20,000 rupees for gold loans? We still have a large section, around 36% of our people do not have bank accounts. So if you're going to restrict it at 20,000 rupees, how will we include these people also, and how will they be able to get and use these gold loans? Thank you. Non-banking financial companies and scheduled commercial banks, all of them are guided by similar rules. And as the Minister of State explained, there is a process of giving enough number of notices to the bank account holder to say your servicing is not up to the mark, and that in the eventuality of you not coming back to pay, we will be forced to go on an auction. Now, even for going on an auction, there are very well laid out procedure. It cannot be done outside of the district. It cannot be done without the presence of the person. It cannot be done unless the valuation is done. It is also not done at a random rate. There is a benchmark rate the NBFC has to fix, and that will not be lower than 80%, I think, over the last 3 or 4 months of gold rate. And that gold rate is not determined by the NBFC, it is determined by the Bombay Bullion Association, I think, who gives out the rate every day, and therefore it cannot be lower than that rate. So these are well-laid, tight processes. I would rather have more information from the Honourable MP if these processes are violated. And if they are violated, indeed, it's for us to act on. But the processes are very much in detailed fashion written down and followed by the banks. And the reserve price is something which they have to declare well in time. So I think if there are specific instances where the Honourable MP thinks these laid out norms are violated, I'm quite willing to take the details and act on it. Shri Manish Tiwari. Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, with your permission, may I ask a slightly different question pertaining to gold? In the year 1971, Richard Nixon, who was then President of the United States of America, gave up the gold standard. After that, gold was hardly considered to be a serious financial asset. In 2006, gold constituted only 6% of the reserves of the central banks of the world. In the year 2024, it is up to 11%. China, India, Poland, Turkey are the most aggressive buyers. Even in India, there has been a surge in the domestic price of gold. My question to the Honourable Minister is that this shift away from the dollar to gold, does it indicate a renewed search for an alternative international settlement mechanism, de-horse the dollar? That's my question to the Minister. So the Honourable Member, has he himself mentioned that it is not the core part of the question, but he's still asking, and I would certainly like to give my brief answer on it. India's, as he observed rightly, the demand for gold in India has not come down. On the contrary, it's going up. And I would think it is very typical of India, particularly for households or small businesses, and it is normally said women, but general households also and women also, to invest in gold because they think it's far more
secure and far more liquid, and therefore as an asset class, we see that sustained interest in it by the households and small businesses as much as women of India. But beyond that, of course, the Reserve Bank also is buying gold to make sure that it has adequate reserves of gold and not just a basket of currencies. And in that, one of the currency which predominantly has been held by the Reserve Bank has been the US dollar. But we also have the reserve currencies in denominations of different denominations of other currencies as well. But the gold is also kept in the Reserve Bank, and gold is also being bought by Reserve Bank. But beyond that, as regards an international currency or potential currency, there is not much for me to comment at this stage. Question number 83, Dr. Prashant Yadav Rao Pandole. बड़ी आपकी किस्मत है, बहुत बोलते हो संसद में। माननीय सदस्य, लोगों का आशीर्वाद। माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा के पटल पे प्रस्तुत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपका आशीर्वाद है। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी यह बताने की कृपा करें, स्किल इंडिया डिजिटल पहल का ब्यौरा और इसके उद्देश्य क्या है। क्या उक्त पहल से देश में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचों को अपनाए जाने को बढ़ावा मिलने की संभावना है और इससे उद्योग में किस प्रकार की सहायता मिलने की संभावना है। इससे नागरिकों को होने वाले संभावित फायदों का ब्यौरा क्या है। सभापति जी, ये स्किल इंडिया डिजिटल हब, ये 13 सितंबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी और आप अनुमान लगाइए कि बहुत अल्प समय में ही अब इस पोर्टल पे 1,30,00,000 लोग पंजीकृत हो गए हैं। जो कौशल विकास की हमारी 3 योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, तीनों के तीनों पूरी तरह से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के सहयोग से अब स्किल इंडिया डिजिटल हब एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उसको एक दर्जा दिया गया है और इंडिया स्टैक में शामिल किया गया है। इसका अर्थ ये निकलता है कि पूरा जो इकोसिस्टम है, जो हमारी सारी स्कीम्स हैं, वो सब पूरी तरह से विजिबल इस वेबसाइट पे हैं। ये वेबसाइट KYC इनेबल्ड है और अनेक दो सरकार के पोर्टल्स हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी पे भी हम तेजी से काम कर रहे हैं, जैसे कि PM गति शक्ति, अपार से इसका लिंकेज है, श्रम जिसमें 30 करोड़ जो पंजीकृत हो चुके हैं वो डेटा भी अब स्किल इंडिया डिजिटल हब के साथ शेयरिंग हो रहा है। तो बहुत बड़ा व्यापक इसका दायरा है। मैं सभी माननीय सदस्यों को भी, सांसदों को भी इनवाइट करता हूं कि इस वेबसाइट के माध्यम से आप ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि GIS इनेबल्ड है। आपके क्षेत्र में कौन कौन सी संस्थाओं में लाइव कहाँ क्या कौशल विकास का कार्यक्रम चल रहा है, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। आप सब सहयोग करें, इसको ट्रैक करें। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर, क्या सरकार इस पहल के तहत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जैसे स्टाइपेंड प्रदान कर रही है? यदि हाँ, तो अब तक कितने लाभार्थियों को यह सहायता मिली है? एवं सरकार इस बात की गारंटी दे सकती है कि इस पहल के तहत प्रशिक्षित युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरियां मिलेंगी, न कि केवल सर्टिफिकेट मिलेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य ने कहा ना कि केवल सर्टिफिकेट मिलेंगे। मैं अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहूंगा। हमें वैल्यू करना पड़ेगा कौशल विकास के कार्यक्रमों को। सभी जो लाभार्थी हैं, जो युवा है, जो युवा शक्ति देश की है, उन्हें प्रेरित करना पड़ेगा कि वो अपने आप में निवेश करें, अपने आप में विश्वास करें और अपने आप को विकसित करें। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, उसमें हम स्टाइपेंड इंडस्ट्री को सपोर्ट के थ्रू देते हैं। 1500 रुपए हर महीने दिया जाता है, DBT के माध्यम से सीधा लाभार्थी के खाते में जाता है और वो पूरी तरह से स्किल इंडिया डिजिटल हब पे विजिबल है, उसी के थ्रू पेमेंट हो रहा है। थैंक यू।